जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमने देखा कि जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को तो यूक्रेनियन नेशनल्स थे, उन्होंने अपना कैपिटल छोड़ के, अपना मुल्क छोड़ के वहाँ से भागने की कोशिश की। मुल्क में इमरजेंसी लग गई, हर लिहाज से एक पैनिक मच गई, ना सिर्फ यूक्रेन के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। बिकॉज हमने हिस्ट्री में देखा है कि जब भी यूरोपियन किसी कंट्री के ऊपर हमला हुआ है तो वो चीज़ें सिर्फ उस मुल्क तक नहीं महदूद रही हैं, चीज़ें एस्केलेट की हैं और वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। वॉर शुड नेवर बी अ सोल्यूशन, इट शुड ऑलवेज बी कंडेम्ड। बिकॉज चंद लोग तो इस दुनिया से शायद जंग लड़ के चले जाते हैं, लेकिन पीछे वो बहुत सी यादें, बहुत सी उम्मीदें छोड़ जाते हैं और बच्चे, फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। रशिया के इस एक्शन के बाद यूएस ने बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दी। अब ये कबल अज़ वक्त होगा देखना कि रशिया किस तरह से रिटालिएट करता है या किस हद तक वो इफ़ेक्ट होगा उनसे। कैजुअल्टीज़ की रिपोर्ट्स क्या हैं, स्टिल टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। आई विल ट्राई कि मैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन लूँ। बिकॉज इन दिस शो आई एम गोइंग टू टेक अ पोलिश नेशनल ऑनलाइन एंड मैं उनसे बात करके ये जानने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पे ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। सो आई विल ट्राई एंड टॉक टू हर। आगिता, कैन यू हियर मी? Agita, thank you so much for joining me on the show. What I want to know from you is what is the actual on-ground situation over there? What is happening over there? And how are the people reacting? How are the people reacting to it? Can you comment anything on it? Thank you, Ismaeel, for having me in the show. So the situation in Poland, being a neighbor of Ukraine, is really bad. There are a lot of troops, there are a lot of soldiers everywhere being prepared for the attack and being prepared to help Ukraine. On the other hand, also Polish people, they started buying petrol, like they are making, supplies, they are buying food, they are taking money from ATMs, from the banks, and it's pretty tense. On the other hand, lots of people help random families. They are giving them houses, they are giving them shelters, they are collecting money for them, food, anything which is needed. All right, it's good that people are coming over here and trying to help each other out. It's obviously one thing that should be done, and obviously if people do not support each other, then obviously the morals they go down even lower. What I want to ask from you now is, do you see or have there been any reports of any reconciliation, any talks behind closed doors? Do you see this conflict getting any bigger? Is there a possibility that this might lead to a possible third world war? Can you comment anything on it? Well, I'm not an expert, but just looking at the history, Poland was often the victim of conflicts all over the world since we are in in the middle of Europe. So I think this is not the first time when Russia is trying to reach for Ukraine, but now it looks really horrible, and it seems like this is not only this happening. I've been reading about China invading forcefully, coming to Taiwan's airspace. This is something very disturbing, and unfortunately I'm afraid that it may lead to the third world war. Unfortunately, I hope not. I hope not. I dearly hope so that is not the case, because humanity cannot afford another world war like we had in the past. Finally, just one last question, if you can comment on it. Have there been any casualties? And obviously, yes, there have been casualties, but how many? There have been, different numbers that have been given to us, but can you just confirm one number in this regard?
Agita, can you hear me? All right, thank you so much for your time. I think the line must have dropped, but obviously we could not get an answer. We could not get an answer as to casualties किस हद तक हैं, because different reports हमें मिल रही हैं. But I want to thank you once again, Agita, for taking out time and joining me on my show. मैं कोशिश करूँगा कि मैं frequently, repeatedly updates जो हैं यूक्रेन से, जो पोलैंड से, जो कि नेबरिंग कंट्री हैं वहाँ पे, पोलैंड नेक्स्ट टू यूक्रेन एंड यूक्रेन नेक्स्ट टू रशिया, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ के लोगों से इन्फॉर्मेशन लेते रहें, अपडेट्स लेते रहें अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से एंड अपने जानने वालों से कि वहाँ पे एक्चुअल ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है. एज फार एज द स्टूडेंट्स आर कंसर्न्ड ओवर देयर, वो लोग भी फंसे हुए हैं. अराउंड 1500 से 2000 स्टूडेंट्स हैं जो कि पाकिस्तानी बच्चे हैं, जो कि यूक्रेन के अंदर हैं, तो उनके बारे में भी अपडेट लेने की कोशिश करेंगे इन द अपकमिंग एपिसोड्स. For now, this was it. This is me, Ismaeel Qasim, signing out. Until next time, stay tuned.